हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज मैं आपको कुछ मेडिकल ऐसे टर्म्स बताना चाहूँगा, ऐसे क्वेश्चन जो कभी कभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में पूछ सकते हैं। तो व्हाट इज़ दी एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। तो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। तो एगोनिस्ट अ ड्रग विच हैव सेम स्ट्रक्चर सिमिलर टू रिसेप्टर एंड हैज हाई इंटरेक्टिक एक्टिविटी विच ब्रिंग अबाउट फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज कॉल्ड इज एगोनिस्ट। And antagonist are drugs which have nutrients have same structure similar receptor but has no intrinsic activity and thus can't produce pharmacological action is called as antagonist। तो ये होते हैं एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। व्हाट इज एन SAIDs। तो इट इज़ अ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। It block the COX cyclooxygenase enzyme and reduce prostaglandin PG through the body. It used in pain, fever, produce inflammatory, example aspirin, diclofenac and paracetamol. What is fever? So in abnormally increase in average body temperature of 98.6 degree Celsius, 37 degree Celsius called as fever. What is DNA and RNA? So deoxyribose nucleic acid, more commonly known as DNA, is a complex necessary to build and maintain an organism. All living things have DNA within their cells. और RNA क्या होता है। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमरिक molecule essential in various biological rules in according regulation and express of genes. RNA and DNA are nucleic acid along with lipids, protein and carbohydrate. Nucleic acid construction one of the four major molecular essential for all the known as the life is called as DNA and RNA. अब what is neurons? Neurons क्या होते हैं। तो neurons also called neurons or nerve cells are the fundamental unit of the brain and nerve system, the cause responsible for receiving sensory inputs from the external world, for sending motor